Students, our today's topic is polysaccharides, that is continuity of the chapter number 2, that is biochemistry. What are polysaccharides? Poly means many, saccharide, similarly the word from the Greek that is saccharon meaning sugar. So many sugar molecules, when they are joined to each other, they form a complex compound called the polysaccharides. Means the complex macromolecular carbohydrate sugars. यानी ऐसे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे जो है वो शुगर्स जो क्या है मैक्रोमोलिकुलर है और वो कॉम्प्लेक्स हैं कि जब उनकी हाइड्रोलिसिस जब की जाती है दे यील्ड हंड्रेड्स ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट्स, दे आर कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड्स. फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, glycogen, pectin, agar, dextrin, and so on. So, what are their properties? Polysaccharides, they are tasteless, and these properties descend from monosaccharide, then to the oligosaccharide, then to the polysaccharide. Monosaccharide sweet in taste, oligosaccharide less sweet in taste, polysaccharide tasteless, not soluble in the water except the amylose. Only the amylose is soluble in the hot water, not in the cold water, in the hot water, and all other polysaccharides they are not soluble or insoluble in the water. They are the most complex sugars, means they can be hydrolyzed. ये complex sugars हैं, इनको hydrolyze किया जा सकता है और जब इनको hydrolyze किया जाता है they yield hundreds and thousands of the monosaccharide units. These are the most abundant carbohydrate in nature. ये जो polysaccharides है ये नेचर में वफर मिकदार में abundantly जो वो पाए जाते हैं. टाइप्स जो है वो दो तरह के जो है वो ये polysaccharides हैं, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homo mean same, यानी ऐसे polysaccharides that are composed of the similar type of the monomer, that is one type of the monomer. For example, that is a polysaccharide that is a polysaccharide that is composed of sugar molecules, long chain of the sugar molecule, that is means glucose का जब वो बना हुआ है that is homopolysaccharide. स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सारे जो है वो ग्लूकोज की जो है वो पॉलीमर है और इसमें सिर्फ क्या होता है एक ही जो है वो मोनोमर है, that is so formed of the same repeating single monomer, they are called the homopolysaccharides. दूसरे हैं heteropolysaccharides. Heteropolysaccharides they are formed of the different monomers, means एक से ज्यादा टाइप के जो इसमें मोनोमर्स होते हैं, जिस तरह के एगर है, पेक्टिन है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन है, जो जिसमें ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, मैनोज हो, मींस के मोर देन वन टाइप ऑफ द मोनोमर्स आर देयर, दे आर कॉल्ड द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. First one, the three of them are explained in the textbook. The first is the starch, then the glycogen, then is the cellulose. The three most abundantly and most common polysaccharides found in the nature. These are the three, and these are explained further. First is the starch. Starch क्या होता है? ये एक जाहिर सी बात है, हमने क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में अभी हमने जब कहा कि ये क्या है कॉम्प्लेक्स है, ये पॉलीमर्स हैं, तो ये जब वो पॉलीमर है इट इज अ पॉलीमर ऑफ, ये किसका जो है वो पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स. तो इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे और उसकी उस ग्लूकोज की क्या प्रॉपर्टीज जब होनी चाहिए, वो कि वो अल्फा ग्लूकोज हो और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो. अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स विद अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इस बॉन्ड के बारे में आपने ओलिगोसैकेराइड में जो है वो पढ़ा हुआ है, उसमें आपने सुक्रोज की मिसाल जो है वो पढ़ी थी और सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,2 जो है वो बॉन्ड होता है. तो 1,2 का मतलब जो है वो क्या है कि एक का कार्बन नंबर 1 होगा और दूसरे का कार्बन नंबर 2 होगा, एक का कार्बन नंबर 1 होगा, दूसरे का कार्बन नंबर 4 होगा, एक मोनोमर का कार्बन नंबर 1 होगा, दूसरे मोनोमर का कार्बन नंबर 6 जो है वो होगा. सो अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड यील्ड हंड्रेड्स ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस. जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. ये कहां पाया जाता है स्टार्च? इट इज फाउंड इन द सीरियल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. स्टार्च इज ऑफ टू टाइप्स, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन जो है ये दोनों जो है वो स्टार्च है. फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो अमाइलोस है ये स्ट्रेट चेन
स्टार्च है, और ये वाली जो है ये ब्रांच्ड चेन स्टार्च है। अमाइलोज जो है ये थोड़ा छोटा स्टार्च पॉलीमर है, और जो अमाइलोपेक्टिन है ये बड़ा जो है वो पॉलीमर है, जैसा कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ 200 टू 5000 ग्लूकोज यूनिट्स। तो इसमें 200 से 5000 ग्लूकोज जब वो यूनिट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, 1,6 मौजूद नहीं जब होता है, इसलिए ये सिर्फ क्या होता है स्ट्रेट चेन जो वो पॉलीमर है। जबकि अमाइलोपेक्टिन दैट इज अ पॉलीमर ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज, कितने इसमें जो है वो 5000 से 10,000 होते हैं। 5000 से 10,000 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है इसमें पाए जाते हैं। देखें 200 से 500 और ये 5000 से 10,000। सो इट इज अ मैक्रो एंड इट इज अ माइक्रो एज कंपेयर टू द अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के मुकाबले में ये छोटा है, वैसे यही भी बड़ा है, लेकिन इसके मुकाबले में ये जो है छोटा है। ये भी ग्लूकोज का है, ये भी ग्लूकोज का है, लेकिन इसमें इतने ग्लूकोज हैं, इसमें इतने ग्लूकोज हैं। इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इसमें अल्फा 1,4 भी है, और अल्फा 1,6 बॉन्ड भी जो है उसमें मौजूद है। यानी ये स्ट्रेट चेन भी देगा और ब्रांच चेन भी देगा। इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर। Amylose is soluble in the hot water only, and amylopectin is insoluble in the hot or the cold water. Amylose की मिसाल maize starch, amylopectin की मिसाल potato starch. And what are their structures? As we know that these are the polymer of the glucose molecules. So one glucose let's shrink the structures according to the space. These are the glucose molecules. CH2OH H H OH OH H H OH H OH H OH इधर भी H ऊपर that is alpha. Similarly CH2OH H H OH OH H H OH H OH CH2OH H H OH OH H H OH H OH. These are the three alpha D glucose molecules, and now they will join. How join? This molecule carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This one 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now the bonding will between the carbon number 1 and carbon number 4. So dehydration synthesis will takes place, and that is alpha 1,4 glycosidic bond, and this OH is available further to go on in this direction, and this OH and this OH will bond like this. That is alpha 1,4. This is the structure of the amylose. This is the structure of the amylose, and this will forward in this direction, and this will forward in this direction. You may write like this N.
इस तरह ग्लूकोज जो है वो जुड़ते जाएंगे, अल्फा 14 अल्फा 14 अल्फा 14 और 200 to 5000 monomers will join to form the amylose. And the structure of the amylopectin, that also like this. How the two amylose chains, when they join to each other, they form a larger molecule. This amylose chain and we will draw another amylose chain. OH, H, H, OH, H, OH, and another molecule CH2OH, H, H, OH, H, H, OH, H और ये OH इसके साथ बाइंड कर गया. Another molecule I'm drawing glucose like this because we have studied how to sketch the ring structure of the glucose. So you have the fluency to draw the glucose. And this OH is further available. That is also the alpha 14. This is also the alpha 14. This is one amylose chain. This is another amylose chain. Both have alpha 14, alpha 14. And to form the amylopectin, the two amylose chains, they get branched. They get joined to each other because we have studied that it is a branch chain polymer. So to make the branch, that it will join. How it will join? The carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and this one is the 6th one. Carbon number 1 of one amylose chain and the carbon number 6 of another amylose chain, they get joined to each other by the glycoside bond. How they will join? This is carbon number 1, CH2 OH है ये, तो इसका OH और जिस तरह ये बॉन्ड बने थे OH OH डिहाइड्रेशन सेंसेस होगी और एक ऑक्सीजन की मदद से ये आपस में जो है वो जुड़ जाएगी, ये ब्रांच जो है बन गई. दिस इज अल्फा 16 because here one carbon is at position 1 and this carbon is at position 6, so this is alpha 16 glycosidic bond and this whole structure will now called as amylopectin. Single amylose, and when they are branched forming the alpha 16 glycosidic bonds, there now it is called the amylopectin. And these further go in this direction, will forward in this direction, forming the macromolecular complex. This is the structure of the amylose and the amylopectin. So that is the structure of the starch. The second one, that is glycogen.
Glycogen. Now what is glycogen? It is also like starch, but it is a macromolecule as compared to the स्टार्च। ग्लाइकोजन भी जो है वो स्टार्च ही है, लेकिन ये कौन सी जो है वो स्टार्च है? ये प्लांट, वो जो हमने पीछे पढ़ा है वो है प्लांट स्टार्च, ये है एनिमल स्टार्च। वो फॉर्म है जो प्लांट में स्टोर होती है, और ये वो फॉर्म है जो एनिमल्स में जो है वो स्टोर होती है। बोथ आर सिमिलर, बोथ आर द polymers of the alpha D glucose, both are the polymers of the alpha D glucose molecule। with alpha 1,4 glycosidic bond। The difference is that simply starch, that is the plant starch, and glycogen, that is the animal starch। It is a smaller macromolecule and it is a giant macromolecule। ठीक है, it is found in cereals, grains, fruits। It is found in liver and muscles of animals। So glycogen is also called the animal starch because it is a chief form of the glucose. It is a chief modified form of the glucose which is stored in the animal liver and the muscles of the animals. It is largely found in liver and muscles. So it is called the animal starch। What will be the structure? There is no difference। CH2OH H each corner represents the carbon atom। N, this is glycogen having alpha 1,4 glycosidic bond। So the structure of the glycogen as well as the starch amylose are same, but there is the difference in the number of the monomers। 200 to 5,000 that is starch amylose, and 5,000 to 10,000 that is the amylopectin, and more than 10,000 means 4,000, 5,000, 10,000 that is the 5,000 to 10,000, and then 10,000 to 20, 30, 40, 50,000
means के more than 10,000 will be the glycogen, that is animal starch, and this is stored in the plants and this is stored in the animals. The last one of the macromolecular polysaccharide which is explained in the textbook, that is the glycogen, then cellulose. The third one, that is cellulose. Cellulose. What is cellulose? It is a polymer of beta D glucose. Monomers with beta 1,4 glycosidic bonds and yield beta D glucose monomers on hydrolysis. What is the difference between that starch glycogen and from the cellulose? Starch glycogen में आपने देखा कि that is a polymer of the alpha D and this is the beta D. They have the alpha 1,4, it have the beta 1,4, means that it have the beta D glucose molecule. HOH की जो position आपने पढ़ी थी monosaccharide में, that is the difference between the glycogen and the cellulose. What will be the structure? CH2OH H OH OH H H OH OH H. This is the beta D glucose. CH2 OH H OH OH H H OH OH H. That is another beta D glucose. Now the bond is between the carbon number 1 and the carbon number 4. The numbering of the carbon are the same, but that is the glucose is the beta D glucose. Now how the bond will form, that is OH and this OH like this. This is the beta 1,4 glycosidic bond and this OH is further available here and this OH will further available here for bonding, and this bonding will continue to be formed and a long chain of the beta D glucose will form, that is the structure of the cellulose. With beta D glucose and beta 1,4 glycosidic bond. This is carbon number 4 and this is the carbon number 1. The some properties of the cellulose are there, that cellulose is the most purified form of the it is the most abundant carbohydrate, means polysaccharide in nature. ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंटली जो पॉलीसेक्राइड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो सेलुलोज है. कॉटन, रुई जो है, that is 99.9%
सेलुलोज होती है, इससे कपड़ा फाइबर जो है वो बनता है, कॉटन रुई। सेलुलोज requires an enzyme cellulase। सेलुलोज की डाइजेशन के लिए सेलुलोज चाहिए, requires an enzyme cellulose for its digestion। So cellulose requires enzyme called the cellulase for its digestion, and the animals which have the cellulase they will can digest the cellulose, and the animals which do not have the cellulase enzyme they will not digest। Herbivores have bacteria, yeast, protozoans in their intestine, which secrete the cellulase enzyme, thus digestion of cellulose takes place in herbivores। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सारे जो हैं ये सारे हर्बीवोर्स हैं, तो इनकी जो है वो इंटेस्टाइन में ये जो वो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ये ऑर्गेनिज्म सेलुलेज एंजाइम जो है वो सेक्रीट करते हैं, और उसके नतीजे में जो है वो ये सेलुलोज को फिर ये डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। बट human intestine do not have the cellulase enzyme। human intestine में cellulase नहीं होता है, इसलिए जो इंसान है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम जो है वो दरख्त, पत्ते, चारा नहीं जो है वो खा सकते हैं। बट ह्यूमंस कैन नॉट digest cellulose। That is all about the polysaccharides। What are polysaccharides? What are their properties, types, and then the three examples, that is starch, glycogen, and the third one, that is cellulose।